welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. दीपिका पादुकोण का इस बार कौन सा लुक नहीं पसंद आया नेटिजन्स को? रणबीर कपूर ने फ्लॉन्ट किया अपना न्यू लुक. नेटिजन्स की तीखी नजर में क्यों आई नीसा देवगन? हाय दीपिका जी, मैम इधर ही रुक जा रहा हूँ. इस बार दीपिका पादुकोण ने ऐसा क्या कर दिया कि वो हुई बुरी तरह ट्रोल. दीपिका पादुकोण एयरपोर्ट पर अपने रेड लेटेक्स पैंट्स की वजह से हुई ट्रोल. फैंस ने कहा रणवीर सिंह ने इसको भी बना दिया अपने जैसा रंगीला. दीपिका पादुकोण के रेड पैंट्स में वायरल लुक के लिए किसी ने तो इतना तक कह दिया कि शी लुक्स लाइक अ जोक नाउ. वैसे ये पहली बार नहीं है जब दीपिका पादुकोण ट्रोल हुई है, लेकिन इस बार दीपिका पादुकोण किसी अलग वजह के लिए ट्रोल हुई है. हाल ही में शाहरुख खान की पठान का टीजर हुआ जारी, जिसमें दीपिका पादुकोण एक अलग किरदार में नजर आएंगी. दीपिका पादुकोण के लिए ये एक बड़ी फिल्म मानी जा रही है. पठान के शूट के लिए शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम हुए स्पेन के लिए रवाना. उसी दौरान एयरपोर्ट पर दीपिका पादुकोण रेड पैंट्स में नजर आईं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण हो रही हैं जबरदस्त ट्रोल. दीपिका पादुकोण का ये लुक किसी को तो बहुत पसंद आया, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर जमकर की ट्रोलिंग. फैंस ने इसको डायरेक्टली रणवीर सिंह के ड्रेसिंग सेंस से कर दिया कंपेयर. दीपिका पादुकोण की इन वायरल पिक्स पर लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स किए हैं. किसी ने लिखा है ये क्या पहन के आई है, किसी ने लिखा है ये तो बिल्कुल आइसक्रीम जैसी लग रही है, किसी ने लिखा रणवीर से दूर रहो भाभी. किसी ने तो ये भी कह दिया कि अब इसको रणवीर सिंह की वाइफ कह सकते हैं. तो वहीं कुछ को वो लगी जोमैटो डिलीवरी वाली. फिलहाल दीपिका पादुकोण अपनी आने वाली फिल्म पठान के लिए स्पेन पहुंच गई हैं. दीपिका पादुकोण ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ फोटोज शेयर की, जिनमें उन्होंने लिखा है कि न्यू होम. इससे पता चलता है कि दीपिका पादुकोण स्पेन में अच्छा खासा वक्त गुजारने वाली हैं. दीपिका पादुकोण ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से अपने फैंस को स्पेन की खूबसूरती का नजारा दिखाया है. जब तक दीपिका पादुकोण स्पेन में हैं, हमें काफी सारे इस तरह के पोस्ट देखने को मिल सकते हैं. शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टारर पठान के टीजर के साथ ही उसकी रिलीज डेट भी अनाउंस हो गई है. ये फिल्म 25 जनवरी 2023 को रिलीज होगी. एक बार फिर से चेन्नई एक्सप्रेस जोड़ी यानी शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को साथ देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं. बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को उनके ड्रेसिंग स्टाइल के लिए लोग ट्रोल करते रहते हैं, लेकिन फाइनली जो उनको पसंद आएगा वो वही पहनेंगे और उनको फैंस इसी तरह से प्यार करते रहेंगे. रणबीर कपूर इस बार आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी की वजह से नहीं, एनिमल की वजह से हैं खबरों में. रणबीर कपूर को लोगों ने क्यों कहा कि ये तैयारी एनिमल की है? रणबीर कपूर का बियर्ड लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. फैंस इस लुक के बारे में कह रहे हैं कि ये लुक तो एनिमल का ही है. रणबीर कपूर, जो कि हम सबको पता है, सोशल मीडिया से हैं काफी दूर. इसी वजह से फैंस को उनकी एक झलक पाने का रहता है इंतजार. हाल ही में रणबीर कपूर एक मीटिंग के बाद नजर आए, वो भी एकदम अलग अंदाज में. पब्लिक के सामने रणबीर कपूर का बियर्ड लुक फर्स्ट टाइम सामने आया है, जिसके बाद लोग इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि रणबीर कपूर का ये लुक उनकी आने वाली फिल्म एनिमल का है. एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा हैं, जिन्होंने कबीर सिंह बनाई थी और कबीर सिंह में भी शाहिद कपूर का बियर्ड लुक था. इसीलिए शायद लोगों को लग रहा हो कि ये रणबीर कपूर का एनिमल लुक है. रणबीर कपूर के बियर्ड लुक के वायरल होते ही लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया है. एक फैन ने लिखा है कि भाई ये तो गैंगस्टर लुक है, कोई कह रहा है एनिमल लुक.
रणबीर कपूर के इस हॉट लुक की वजह से लोग उनकी गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट को टैग करके कह रहे हैं लकी। रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म्स जैसे ब्रह्मास्त्र, शमशेरा, एनिमल पहले से ही फैंस की हिट लिस्ट में है और इस बियर्ड लुक के बाद तो फैंस बस रणबीर कपूर की फिल्म्स का वेट कर रहे हैं। हाल ही में आलिया भट्ट की गंगूबाई रिलीज हुई थी। फैंस ने और मीडिया ने उनसे रणबीर कपूर के बारे में काफी सवाल पूछे, जिससे पता चलता है कि लोग रणबीर कपूर को कितना प्यार करते हैं। रणबीर कपूर को हाल ही में फैमिली के साथ डिनर करते हुए भी देखा गया। रणबीर कपूर ने मॉम नीतू कपूर, सिस्टर रिद्धिमा कपूर और उनके अंकल रणधीर कपूर के साथ डिनर किया। इस वीकेंड रणबीर कपूर ने फैमिली के साथ काफी टाइम स्पेंड किया और उनकी सिस्टर रिद्धिमा कपूर ने इसकी कुछ झलकें सोशल मीडिया के जरिए फैंस तक भी पहुंचाई। रणबीर कपूर भले ही सोशल मीडिया पर ना हो, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स सोशल मीडिया पर उनकी फोटो साथ में शेयर करते रहते हैं, जिसकी वजह से फैंस को थोड़ा आराम मिल जाता है। हाल ही में रणबीर कपूर की मॉम नीतू कपूर का एक डांस वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के घर पर एक पार्टी में नीतू कपूर ने जमकर डांस किया। उनके मूव्स और उनकी एनर्जी को देखकर लोग उनके एक बार फिर फैन हो गए हैं। मनीष मल्होत्रा ने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। हाल ही में गंगूबाई काठियावाड़ी देखने के बाद नीतू कपूर ने होने वाली बहू आलिया भट्ट के परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ भी की। नीतू कपूर काफी वक्त के बाद एक्टिंग में कमबैक करने वाली है। नीतू जी की इस फिल्म का सभी को है इंतजार। रणबीर कपूर के पाइपलाइन में काफी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वेट उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र का हो रहा है, क्योंकि इस फिल्म में पहली बार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी फैंस के सामने आने वाली है। लोग ऑन स्क्रीन रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को साथ देखना चाहते हैं, इसलिए भी इस फिल्म का जोरों से इंतजार है। नायसा जी। बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की लाडली बेटी नीसा देवगन ने ऐसा क्या कर दिया कि वो हुई बुरी तरह ट्रोल। स्टार किड नीसा हुई अपने एटीट्यूड की वजह से ट्रोल। लोगों को पसंद नहीं ये बात। फैंस ने अजय देवगन की बेटी को कहा कि इतना एटीट्यूड किस बात का है जनाब। पैप्स को इग्नोर करने पर फैंस ने कहा कि हीरोइन वाली कोई क्वालिटी नहीं है इसमें। अजय देवगन की बेटी नीसा देवगन, जो अपने ग्लैमरस लुक की वजह से न्यूज में रहती हैं, इस बार वो भी दूसरे स्टार किड्स की तरह किसी रॉन्ग रीजन की वजह से न्यूज में है। दरअसल नीसा देवगन अपनी फ्रेंड्स खुशी कपूर और शनाया कपूर के साथ स्टाइलिश आउटफिट पहने कहीं से बाहर निकल रही थी और जैसे ही पैप्स ने उनकी पिक्स लेने की कोशिश की, उन्होंने पैप्स को इग्नोर कर दिया और सीधा जाकर कार में बैठ गयी, जिसके बाद लोग उनके इस एटीट्यूड से खुश नहीं है। नायसा जी। ये वीडियो वायरल होता देख लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। किसी ने लिखा है कि इतना एटीट्यूड किस बात का है। किसी ने लिखा है कि डोर बंद करने पापा नहीं आने वाले। किसी ने कहा कि नीसा में वो वाली बात नहीं है। किसी ने लिखा कि ये अकड़ किस बात की है। किसी ने लिखा है नीसा जी कौन सा नासा से आई हैं। फैंस की माने तो नीसा देवगन थोड़ी शाय है। उन्हें कैमरा के सामने आने में शाइनेस फील होती है। वो ज्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करती। माना जा रहा है कि नीसा देवगन को भी माँ काजोल और पापा अजय देवगन जैसे ही एक्टिंग में आने का शौक है। नीसा देवगन, खुशी कपूर और शनाया कपूर न्यू बी टाउन बडीज हैं। तीनों को साथ में कई बार देखा गया है, कभी शॉपिंग करते हुए तो कभी पार्टी करते हुए। तीनों अपने फैशन सेंस और ड्रेस स्टाइलिंग की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। तीनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, जिसकी वजह से अभी से उनकी काफी बड़ी फैन फॉलोइंग हो गई है। शनाया कपूर, जो कि जाने माने एक्टर संजय कपूर की बेटी हैं, उनकी डेब्यू फिल्म बेधड़क अनाउंस हुई है। हर बार की तरह इस बार भी करण जौहर एक और स्टार किड को लॉन्च करने जा रहे हैं। इस फिल्म में शनाया कपूर के साथ गुरफतेह पीरजादा और लक्ष्य ललवानी होंगे। इस फिल्म को शशांक खेतान डायरेक्ट करेंगे। इसके साथ ही खुशी कपूर के बारे में भी न्यूज आई है कि वो भी जल्दी बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है। खुशी कपूर के साथ महानायक अमिताभ बच्चन के ग्रैंडसन अगस्त्य नंदा और शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान लॉन्च होंगे। खुशी कपूर और शनाया कपूर की तरह माना जा रहा है कि नीसा देवगन भी फिल्म में डेब्यू कर सकती हैं, क्योंकि उनको भी एक्टिंग में काफी इंटरेस्ट है।
on the show. Naaradan cast and team ने किया Zoom से exclusively interact. I'm someone who thought of quitting once, and I started from zero. That's So wonderful. I can go back to zero and come back if I want. If I don't want, I can quit and leave. But at some point, I asked myself, what do you want? Like, you can follow their footsteps, or you can just ask yourself, what do you want? And I asked myself, I should be able to do whatever I want. For that, I should be unpredictable. I was not sure if I can act. Even then, I was not sure, but I wanted to try my luck. I was not ready to accept my failure without trying. So I resigned my job. But my father was not very happy with that. We had this argument, and my father was like, okay, you do whatever you want. Instantly I resigned and I came out of that. And It takes courage to do that. yes, but I had this mind voice telling me, maybe it's foolish, but still I had this mind voice telling me, okay, go try. Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to Speak Easy. My guest today is a huge Malayalam star, and of course today he's globally acknowledged and loved because his last film was a major hit. I'm talking about the person who's a superhero, and I think he's a superhero in his real life too. I'm talking about the very fabulous Tovino Thomas. Hello. Hello, I hi. could see you sniggering a little. I think you are kind of a superhero. We kind of did establish that while I was talking to you about your schedule. Yeah, everyone has a superhero inside them. See, I like the fact that you did not deny and say no. No, I told you, no? If you are a superhero, I am a superhero. When the right time comes, the superhero Comes acts to be out. done. Yeah. When was the last time you truly felt the superhero come out of you? Every day while I am at work. You feel that? Yeah? Yeah, right now I have been shooting for this movie called Tallumala. For that, first I had to lose some 10 kilos. And once that portion was finished, then I had to put on 5 kilos. And the fight sequences are so tiring, and you know, the Malayalam industry, we work under a lot of constraints. Correct. So we have tight to schedule work, that you have to follow. tight schedule, and we have to work. We have to do the extra work to compensate the constraints. Do you now think post Milan your entire status has obviously increased more, but do you think it has added to what you were trying to create, trying to connect and accept more fans and connect to more people? Do you think that has added to what you already were building for yourself? Yes, from the time I came into the industry, I wanted. See, Malayalis are people who watch all language movies. We watch Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada, Hindi, English, or Spanish, Korean, or Japanese. Majority of Malayalis, it's intertwined with our life. Movies are intertwined with our lives. So, to impress them, we had to work harder. And from then on, I had this thought in my mind. If I can, sitting in Kerala, if I want to watch a Korean movie, I find out where it is available and I watch it. Similarly, different language movies, I try and watch it. So why don't they watch our movies? This thought I had since a very long time. And 5 years back in an interview, I told the only thing I want is an international exposure. And you had to put that in the universe? Yeah, and I want people from other states and other countries and other continents to watch our content, and cinema is basically visual language, so they'll be able to connect to it. And it actually happened. It was a dream to me, a dream for me, and a lot of things made that possible. Even the lockdown and the growth in OTT culture, everything helped for this, for whatever I have achieved. But now I understand that lot more people will watch my next movie. People who have already watched Minnal Murali will be like, okay, this is the movie from that actor who acted in Minnal Murali. Okay, let's try watching this. And there is a possibility that lot more people who would have watched my movie before Minnal will be watching Naaradan. So I understand that my responsibility as an actor, when I'm being the face of a movie, it has increased. So hereafter, when I work, I'll definitely take all these into considerations. I want
Now I have to impress a wider range of audience. Yeah. And also the targeted audience for Minnal Murali is not similar to targeted audience of Naaradan. They are two different kind of movies. And you know, speaking of Naaradan, we were just discussing. It of course is a political thriller, and it deep dives into the lives of a journalist, which you are playing, right? I want to know what you think of today's journalism. By the time I finished the shoot of this movie, my respect to the news presenters increased a lot. Yeah. But at the same time, when I was in that shoes, I could understand or relate to the pressure, the competition, and all the struggles news channels and the presenters and whoever is working in the news channels has to go through. But having that said, it cannot be a reason for like ignoring the facts and giving the news like when it was just one news channel or when it was one 15 minutes or 30 minutes news back in my childhood, we were trained to believe whatever we hear in the news. So when it was just 15 minutes or 30 minutes of news in my childhood, I was trained to believe blindly whatever we heard in the news channels. So that's how most of them are. We actually believe whatever we see in the news. But we shouldn't believe whatever we see in the movies. Movies is all about making a lie believable. That's entertainment industry. That's movies. But news channels cannot take that liberty. News channels have a much more responsible job than an entertainment industry. So I think like nowadays if I want to know the real fact about a news, I have to watch 5 news channels and then sit and analyze which one is right, which perspective is right. So news channels has got a bigger responsibility. It shouldn't be compromised just because of all these competitions, TRP and all. That's what I believe. And I'm not generalizing this. I'm not telling everyone is like that, but there are certain people who does that, and it can be dangerous. You cannot, I mean, news channels cannot take that liberty which we take in filmmaking. But I also feel like through art you can make a huge impact. Yes. And I feel like your films also a lot of times have reflected that, Yes. right? We have tried. Yes. Cinema is one of the very influential medium. Yeah. So even if you are not giving any messages, good messages, even if you are not giving any good messages, we try our best not to give any wrong messages. We shouldn't glorify anything like that. Instead, if it's just entertainment also, it's fine. It's not mandatory that every movie should give some positive message. It's not mandatory. Sure. It can be just entertainment. That's fine. But giving a wrong message cannot be appreciated. You don't take your stardom too seriously. I don't own that stardom. I just want to be a good actor. That's it, right? Then what scares you, if I can ask you? You very interestingly said that I'm content, and it's great. It takes a lot of security for an actor to be in a place and know exactly what he wants, and you know that. But what scares you? What sort of... Being predictable again. To being predictable again? Maybe this is a cycle. I'll have to take a break again. But I'll try my best to prevent that. I'll not let myself becoming stereotyped again. But I'm sure that also had like a lot of wrong advices that you thankfully didn't take help to be there, right? What were the advices that are usually given to actors and which you didn't take and, you know, which worked for you fabulously? And I'm someone who thought of quitting once. So, and I started from zero. That's wonderful. So I can go back to zero and come back if I want. If I don't want, I can quit and leave. I'll end it by asking you, every actor says that, oh, you know, I have taken something from this character and I have learned this. What have you learned from your character in Naaradan? From every character I learn something. Because at times I think when I act in a movie, I'll be trying to think as that character, from that character's perspective. Then at times I
I see things or I understand things which Tovino Thomas, Yeah. the person, wouldn't have understood. We'll be in that situation, like we'll be trying to relate to the character, Sure. we'll be trying to do whatever the character justifies. Suddenly things strike like this, which Tovino Thomas wouldn't have never understood. The character will understand. Absolutely. So, from every movie, I'm learning something. I'm evolving as a better actor and a human being. Thank you once again, Tovino. Pleasure talking to you. It Thank you was so much. lovely chatting with you. We'll have a long one maybe for the success of the film. Yeah, sure. Thank or you. maybe I'll come with my next movie. Please do. Thank you. Thank you so much.